Hey everyone, welcome back to the series. Today we are solving LeetCode Problem 3, longest substring without repeating characters. So now this problem may look simple at first glance, but trust me, this is one of those questions that separates brute force coders from smart pattern thinkers. And today we are not just solving it, we are going to understand it deeply. Let's understand what the question is asking us. So we are given a string S and we have to find the length of the longest substring that contains no repeating characters. Now what is important is that we should know what substring actually means. Substring means continuous sequence. We cannot skip characters. And we are not returning the substring, we are returning only its length. This is another thing that we have to keep in mind. First of all, our substring has to be continuous and consecutive. For example, if there is this ABCDE string, ABC is a substring, but ACE or ACB or ABD, these are not substrings. Okay? And our goal, again, very important, is to return the maximum length, not the substring, maximum length of the substring. What we have to keep in mind is that substrings must be continuous, okay? Characters must appear next to each other and no gaps or skips allowed. Like I said, if there is the substring A, B, C, D, and E, A, B, C can be a substring, C, D, E can be a substring, B, C, D can be a substring, but if you say that I want to do A, B, and D, that is not allowed. Okay, then no repeating characters allowed. For example, if I say A B B A, so because these are repeating characters, so maximum substring we will get, but repeating characters अगर हैं तो those are not allowed in the substring. For example, A B तक मैं count कर सकती हूँ, but B जब मैं इस पे आऊँगी तो this is because this is being repeated, we are not going to include this, okay, in our substring. Then what we have to keep in mind is that we have to return the length only and not the substring, okay? And the fourth observation that we must not overlook is that input can contain any characters. Lower case हो सकता है, upper case हो सकता है, digits हो सकते हैं, symbols हो सकते हैं. Basically any valid input is allowed, okay? Now let's visualize this with an example. So we have a string which is A, B, C, A, B, C, B, P. Okay. Now if we simulate it like a human, we'll start building a substring. Now हमारा सबसे पहला substring is A, allowed, A, B, allowed, A, B, C, allowed, A, B, C, A. Now because this is being repeated, this is not allowed. Now how are we going to calculate the longest substring then? We are not going to restart anything. We are going to adjust, because this problem is not about checking every substring, okay? This is about maintaining a valid window. This is what I have used here, right? So ABC is the longest substring with all unique characters, length 3. When we hit the second A at index 3, we have seen it before. So we shrink the window from the left. यहाँ से हमारी जो विंडो हो जाएगी वो श्रिंक हो जाएगी और हमारी जो मैक्स विंडो की लेंथ होगी फिर वो यहाँ से शुरू होगी B, C, A. But again B repeat हो रहा है. So this process will repeat. We'll get to know this further. So this is our character. Again, this is our second example, which is BBBBB. Now, as I said, there are no repeating characters are allowed when we are counting the longest substring. Now, BBBBB is a valid string. Now, if we see B, okay, this is our window. So B allowed, BB not allowed. So now, if you can see, हमारे सारे ही characters भी हैं. So हमारी maximum length ही 1 हो जाएगी, right? Every character is B. As soon as we try to expand the window to include the second B, we detect a duplicate. The left pointer jumps forward, keeping the window always at size 1.
Understood? This is going to be our third example, PWWKEW, again a valid string. And we are going to start from here. So P is a valid substring, PW is a valid substring, PWW is not a valid substring. So we are going to shrink the window, right? So हमने विंडो श्रिंक करी, अभी हमारा PWW था, तो अब हम इस वाले W पे आ गए, तो हमें लेफ्ट से श्रिंक करना है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. बट अगेन WW रिपीटेशन हो रहा है, सो अगेन हम यहाँ से शुरू करेंगे. सो यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो KEW हमारा वैलिड लेंथ आएगा. ओके, WKE हम नहीं लिख सकते, हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है. ओके, द विंडो PW इज वैलिड लेंथ 2. Then the second W causes a reset. After the reset, window KEW is the longest unique substring with length 3. जो जिसकी वजह से हमारा रेपिटेशन हो रहा है उसके आगे से हमेशा शुरू करते हैं. ठीक है, इसलिए WKE is not valid. So guys, on the surface it looks easy, but if we think naively, we might try generating all possible substrings. At its core, the problem asks us to check all possible substrings and find the one with the maximum length where every character is unique. So this is basically a flowchart, if you can remember. We'll scan all possible substrings, we'll verify if anybody has any duplicates, we'll immediately eliminate them, and we'll track and return the maximum length. This is our naive approach, like this is what we are thinking. Now, if you look at the key insight I have put, this brute force thinking leads naturally to an optimized sliding window. Sliding window is going to be the data structure that we are going to use in this problem. Yet you don't know about it, so we are going to discuss in our further slides. But what I want you to know is that if you are thinking in this way, to brute force say naturally we'll get we'll understand sliding window very well if we know what brute force is talking about. So it's very essential that you understand what brute force approach is actually in this case. So we are scanning all the possible substrings, all, and then we'll verify, we'll look at all the substrings, and we'll segregate them on the basis of duplicates and non-duplicates. So duplicates we will, the substrings having duplicates will be immediately eliminated, and the non-duplicate substrings we'll choose the maximum length among them. Okay. So now this is basically the gist of what I already explained to you. Brute force हमारा क्या है? We are going to generate all the possible substrings. For each substring, we are going to check if all characters are unique. We'll keep the track of the maximum length seen so far, and we will return the maximum length after all checks. The problem here though is that we are going to use 3 loops here, क्योंकि हम एक बार ही traverse करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारी n है, सब स्ट्रिंग्स हमारी रफली n स्क्वायर होंगी, एक हम डुप्लीकेट के लिए चलाएंगे लूप, तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, विच इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट. दिस इज ब्रूटल. So for n is equal to 10,000 characters, this requires up to 10 to the power 12. Basically this is not practical. Okay, so the number of operations it's going to take, it's not at all practical. So we are going to use a better approach, but we need to understand why brute force is not efficient enough. Okay, so this efficiency is determined by the following factors. Exponential substrings. Okay, why a substring of length n has n into n plus 1 by 2 substrings. This is basic formula. Okay, for n equals to 1000, that's roughly 500,000 substrings to check. Practically not possible. Duplicate checking is being repeated. Not practical again, क्योंकि हम ऑलरेडी लूप को हम ऑलरेडी एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं, बट डुप्लीकेट चेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चेक करना पड़ रहा है. सो रीस्कैनिंग इज मेकिंग इट वेरी इनएफिशिएंट, राइट? You should take care of the explanations that I have provided you with. Okay, then what we have to take care
of is that this is not scalable. Okay, not scalable. Real world strings can be millions of characters. Order of n cube time is a deal breaker for production systems. We're talking about a very large scenario. So we need a smarter approach that avoids all our hassle. जो repeated work हो रहा है, we have to eliminate that. So as I told you, हमें optimization चाहिए. Instead of rechecking every character from scratch, can we remember what we have already seen and skip ahead? Brute force में हम क्या कर रहे हैं? हम rescan कर रहे हैं. हर बार हमारा effort waste हो रहा है. Sliding window में हम क्या नहीं करेंगे? हम यही नहीं करेंगे. हम rescan नहीं करेंगे. हम position को याद रखेंगे. हम already traversed characters को वापस से ट्रैवर्स नहीं करेंगे. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम इसके लिए हैश मैप यूज़ करेंगे, which we are going to, अच्छा I've mentioned here also कि we are going to use a hash map to track the last seen position of each character. Why? Because this will make our work very easy. Okay. Now we must understand what sliding window मतलब what our optimal solution actually means. So we are going to use two pointers, left and right pointers. Okay. So जो left pointer होगा that will shrink मतलब shrink upon repetition, और right pointers जो हमारा right pointer होगा that will move forward if no repetition is there. जो हमारे विंडो में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें रेपिटेशन नहीं होना चाहिए. हमारा राइट पॉइंटर पहले आगे जाएगा, वो चेक करेगा कि जिस स्ट्रिंग पर वो गया है वो स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारे विंडो में एग्जिस्ट करती है क्या. अगर करती है तो फिर हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और हमारी विंडो को श्रिंक कर देंगे. ओके, ये भी हमने मेंशन किया हुआ है, श्रिंक ऑन डुप्लीकेशन. When a duplicate is found, jump left pointer past the last occurrence. Then we have expand window, which is the calm of right pointer. Move right pointer forward to include new characters one by one. And for the traversal of our string, we are going to use hash map because this makes our work easier. This makes traversal easier. We have seen this in previous problems as well. Okay. This is the visual walkthrough of our sliding window, what we are going to use, the approach that we are using here. A, B, C, A, B, C, B, B. This is our very first example that we took in the beginning. Now, हमारा A, B, C is a window. क्यों? क्योंकि सब यूनिक है. इनिशियली हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों जीरो था. राइट पहले आगे गया, उसने देखा कि A और B दोनों ही अलग है, तो यूनिक है, तो हम इसको रखेंगे. देन राइट अगेन आगे बढ़ा, सी देखा उसने ए बी सी तीनों यूनिक है. नाउ डुप्लीकेट ए एट राइट इक्वल्स टू 3, सो वील मूव लेफ्ट टू 1. ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3. ओके, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर रेपिटेशन आ रहा है, ये श्रिंक हो गया. सो अब ए इज आउट ऑफ क्वेश्चन. अब हम बी सी ए देख रहे हैं. नाउ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगेन राइट पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे. अब यहाँ पर क्या दिख गया हमें? यहाँ पर तो हमें भी दिख गया. तो डुप्लीकेट बी एट राइट विच इज एट विच इंडेक्स? 4th इंडेक्स. सो वील मूव लेफ्ट टू 2nd इंडेक्स. सो सी ए बी अगेन अब हमारे विंडो में वापस से तीनों यूनिक कैरेक्टर्स हैं. दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स द स्ट्रिंग लॉजिकली. This is going to be our optimal solution, the code of our solution. Now if you look at it very closely, सबसे पहले हम इस वाली लाइन को देखेंगे. Unordered map char comma int last seen. What this map is doing is that this is basically the definition of a hash map, by the way, and this map stores character and the last index where it is appeared. Why are we including the last index? Because when duplicate appears, we need to know exactly where it was previously seen and we need that instantly. तो हैश मैप हमें क्या देता है? ऑर्डर ऑफ 1 का एक्सेस देता है. ओके, देन लेफ्ट पॉइंटर को हमने 0 पे इनिशियलाइज किया बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा इनिशियली तो 0 ही चल रहा है. राइट पे 0 ही है पर वो हमने लूप पे कर दिया है, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग. मैक्स लेंथ हमारा 0 है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न एज आर solution. Now in right equals to 0, right is less than s dot length, right plus plus. This is showing us कि right string by string traverse कर रहा है. ठीक है.
after every iteration we are trying to expand the window, ठीक है। तो राइट हमारी जो टेरिटरी है उसको बढ़ा रहा है एक एक करके यहाँ से। दिस इज फॉर क्लैरिटी, क्योंकि हम जिस पे भी हैं हम उसको सेव कर रहे हैं करंट कैट नाम के एक वेरिएबल में। जिस भी फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहाँ पर एप्पल, ठीक है, तो ये जो एप्पल है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब हम ए पे गए तो हमने ए को करंट कैर में कर लिया स्टोर, फिर हम राइट पॉइंटर को हमने आगे बढ़ाया, अब हम पी पर आए तो फिर हमने पी को स्टोर कर लिया। तो ये करंट कैर हमारा स्टोर कर रहा है बेसिकली द करंट कैरेक्टर दैट वी आर ऑन, ओके। सो द नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप, ओके, बिकॉज यही है जो है एक्चुअली में सबसे इम्पॉर्टेंट लूप, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। फर्स्ट कंडीशन है क्या ये लास्ट सीन डॉट फाइंड करंट कैर इज नॉट इक्वल टू लास्ट सीन डॉट एंड। इसका मतलब है कि क्या ये पहले अपीयर हुआ है, हैज दिस कैरेक्टर अपीयर्ड बिफोर। और हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि क्या ये हमारे विंडो के अंदर था। ये वाली जो कंडीशन है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि क्या ये रिपीट हुआ है, द डुप्लीकेट हैज़ इट अपीयर्ड बिफोर, हैज़ दिस कैरेक्टर अपीयर्ड बिफोर, क्या इसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और दूसरी कंडीशन जो है वो पूछ रही है कि क्या ये हमारा जो कैरेक्टर था अगर वो रिपीट हुआ है तो वो हमारा विंडो के अंदर है या नहीं है। अगर तो ऐसा है तो हम श्रिंक कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा डुप्लीकेट चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, डुप्लीकेट चेक कर रहा है। तो अगर डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहा है विंडो के अंदर तो हम श्रिंक कर देंगे, ठीक है, ये श्रिंकिंग कंडीशन है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एल्स भी आप लिख सकते हैं, पर मैंने लिखा नहीं क्योंकि एक ही कंडीशन थी। अगर ऐसा नहीं है तो हम राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, मैप में आगे ट्रेवर्स करा देंगे। लास्ट सीन करंट कैर इक्वल्स टू राइट। अगेन दिस इज द हमारा कैलकुलेटिव थिंग। ये राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 जो दिया हुआ है दैट इज आर विंडो लेंथ फॉर्मूला, ओके। वी कीप अपडेटिंग द मैक्सिमम और मैक्स लेंथ हमारा आंसर कैंडिडेट है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 याद रखना। क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो हम जब मैं मान लो एप्पल की बात ही मैं कर रही थी तो एप्पल के ही बात में हम पहले ए पी पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर जब हम इस वाले पी पर आ रहे हैं तब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा जो विंडो है उसमें डुप्लीकेट आ रहा है, राइट। तो हम फिर आगे जा रहे हैं। सो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इसीलिए आया है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी डाउट है यू कैन पुट दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट, ओके। नाउ वील रिटर्न द मैक्स लेंथ एंड दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। Now what we have to take care of is that the time and space complexity, पर इसमें हमें करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बहुत ऑप्टिमल आई हैं। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है ऑर्डर ऑफ एन वाई बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग इट ओनली वंस और हम उसको स्टोर करते जा रहे हैं एंड वी आर रिमेंबरिंग द स्ट्रिंग्स दैट वी ऑलरेडी ट्रैवर्स। तो हमें वापस रीस्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। Each character is visited once. The right pointer traverses the string once, the left pointer only moves forward, never backward. Total operations is linear in strength. String length मतलब space complexity order of 1 सीधा सीधा आ जाता है because ASCII में तो fixed character set है, तो मतलब I hope you know this. इसमें हमारा order of 1 ही होता है क्योंकि fixed character set है। The code I just told you have all the edge cases covered. क्यों, क्योंकि अगर हमारे में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा आंसर, ओके। एम्प्टी स्ट्रिंग है, सिर्फ A है 1 आएगा, डुप्लीकेट है 1 आएगा बिकॉज ऑल रिपीटिंग लेफ्ट पॉइंटर रीसेट्स एट ईच स्टेप। A B C D 4 आएगा बिकॉज ऑल आर यूनिक। A B B A 2 आएगा, ओवरलैपिंग डुप्लीकेट A एट इंडेक्स 3 यहाँ पे।
but left must not go back past index 2. ठीक है? What you need to understand, guys, is that this problem teaches you something bigger than the problem itself. हमने सबसे पहले तो पैटर्न देख लिया, स्लाइडिंग विंडो प्लस हैश मैप. This combination unlocks a huge family of problems. Master it here and apply it everywhere. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट भी समझाया है, हैश मैप भी बताया है. तो अप्लाई इट इन दीज प्रॉब्लम्स. पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई, पर ऐसे ही और प्रॉब्लम्स भी हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए. लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम में ये यूज़ होगा. सब एरे प्रॉब्लम जिसमें मैक्सिमम सब एरे साइज के दिया होगा, स्मॉलेस्ट सब एरे का सम दिया होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स में भी ये काम आता है. फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स में ये काम आता है. So recognizing patterns is the key that separates good programmers from great ones. This is for your motivation that I've put here. Okay guys, what are our key takeaways? सबसे पहले हमें brute force जितना possible उतना avoid करना है, but it is very important to think in that direction. Second, we have to think in terms of windows, max length, min length, right, left, shrink कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं. एक ही बार ट्रेवर्स हो जाए तो बहुत अच्छा है. हैश मैप्स को यूज़ करने की आदत होनी चाहिए क्योंकि ट्रेवर्सल बिकम्स वेरी ईजी. एकदम ऑर्डर ऑफ वन एवरेज के केस एक्सेस आता है तो बहुत ईजी हो जाता है. ऑप्टिमाइज करना है हमारा रिपीटेड वर्क, बिकॉज उसी से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और उसी से हमारा प्रोग्राम अच्छा माना जाएगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर व्यूअर्स, हमारा प्रॉब्लम 3 कंप्लीट हो चुका है और हमने इसमें से जो 4 की टेकअवेज लिए हैं वो हमारा स्लाइडिंग विंडो, हैश मैप, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लिया, उसने ऑर्डर ऑफ वन स्पेस लिया. If this explanation made sliding window click in your mind, that means we are building patterns now and we are not just solving problems. Next time we are going to level up with problem number 4. Until then, keep coding smart, not hard, and thank you for watching. Signing off, Aishwarya.